आई वॉज वेटिंग। तो आज हम दो क्लास करेंगे, आपकी कल वाली भी और आज वाली भी पूरी कर लेंगे, ठीक है। सो आज हम पहले कर रहे हैं डेटा एनालिसिस इन स्टैटिस्टिक्स। अभी हम 2 घंटे पढ़ेंगे सर। 2 घंटे हाँ, पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है सर। पर कल वाली क्लास भी आज करवा देता हूँ ना मैं। ओके, वी स्टार्ट। सो हमने पहले डाटा कलेक्शन वगैरह कर लिया था। आज हम कर रहे हैं डाटा एनालिसिस इन स्टैटिस्टिक्स। इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो आप डाटा कलेक्ट करते हो उसको आप इंस्पेक्ट करते हो, क्लीन करते हो। क्लीन का मतलब जो इर्रेलेवेंट डाटा है उसको निकाल देते हो। ट्रांसफॉर्म इट इनटू योर tool which you want to use for analysis, and then after analysis you interpret data। क्यों करते हैं ये सब? सो दैट मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल सके, रिजल्ट निकल सके, डिसीजन बना सकते हैं हम। It is a critical step in research and decision making process. Most critical step. You have corrected data. Now analysis of the correct data. Correct analysis is very, very important. It helps to uncover patterns, relationships and trends within data sets. Data sets जो data collect किया है उसके उससे आपको पता चलता है variables के। बॉडी वॉश भी हो गया था ना। हेलो, बॉडी वॉश करते ना तो मैं उठते भी रुले। हेलो। किसी का ये माइक ऑन है। प्लीज बहन जी बीच में नहीं बोले ना, इंटरफेयर नहीं करें। तो डाटा से हम निकालते हैं क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वहां से निकालते हैं। जो डाटा एनालिसिस है वो हम सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आर, पाइथन, एस एस, SPSS एंड मैनी अदर। ये टूल्स कंप्यूटर्स में होते हैं, सॉफ्टवेयर है ये, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस एंड डाटा सेट। किस तरह के आपका क्वेश्चंस हैं, आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, और उसके लिए आपको कैसा टूल चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द डाटा कलेक्टेड। Effective data analysis is crucial for making informed decisions. Correct, effective, to the point data is very important to गैदर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जहां से आप डाटा से डिसीजन निकालते हैं डिस्कशन करके, इंटरप्रेट और उसका पब्लिक डोमेन में दे देते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम। effective data analysis helps in solving problems. It answers your original question, and of course it adds to the domain of the knowledge. There are two types of things: parametric data analysis and non-parametric. Now, there is regression analysis also. We will just see them one by one. The parametric data analysis is a statistical method used to analyze data that is assumed to follow a specific probability distribution. Specific probability distribution based on certain assumptions such as data is continuous, having a normal distribution, having a constant variance. आप एज्यूम करते हो कि डाटा इज कॉन्टिन्यूअस, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप एज्यूम कर लेते हो कि इस लेवल का ये डाटा आएगा आपके पास, और उसका वेरिएंस भी कांस्टेंट है। अगर ये चीजें एज्यूम नहीं कर सकते तो पैरामीट्रिक टेस्ट के बदले नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाया जाता है। पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, ये पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं। दे आर सेंसिटिव टू वायलेशंस ऑफ देयर अजम्पशन। जो आप एजम्पशन एज्यूम करते हो, दे आर सेंसिटिव, दे फॉल विद इन दैट कैटेगरी। इफ दे डोंट फॉल विद इन दैट कैटेगरी ऑफ अजम्पशंस तो फिर ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना पड़ेगा। Key features of parametric test analysis are normal distribution. सबसे पहले इसका parametric test assume that the
डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपने अज्यूम कर लिया कि आप जो भी आंसर ले रहे हो आउट ऑफ 140 और 60 के बीच पड़ेंगे, तो यू विल फाइंड answers coming between 40 and 60 only. So that is the normal distribution, and parametric tests follow that. In this, the data is systematically distributed around the mean. If the mean is 50, the data is systematically distributed, say between 45 and 55 or 40 and 60. The whole data is there only. And maximum data is around 50 itself. Large proportion of the data falls within 1 or 2 standard deviations of the mean. जो standard deviation होती हैं कि 50 से कितना नीचे जाओ ऊपर चला जाएगा, let us say 5 each. So 45 और 55 के बीच आपका 9 more than 90% data. That is normal. Continuous data, parametric tests are typically used with continuous data. It means data can take on any value within range. Within range कोई भी वैल्यू डाटा की आ सकती है। रेंज आपने 45 और 55 की बनाई तो उसमें कहीं भी वो डाटा आपका आ सकता है। दिस इज इन कंट्रास्ट कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट डाटा। कैटेगोरिकल डाटा जिसमें क्वालिटेटिव डाटा होता है, जिसको आप अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ये उससे डिफरेंट होता है। Homogeneity of variance. It is assumed that variance of different groups or variables are roughly equal. Homogeneity of variance. आप assume करके चल रहे हो कि जो variables हैं अलग अलग ग्रुप्स के वो एक जैसे हैं। Sample size is large enough. इसमें जो मिनिमम सैंपल साइज होता है वो आपको फिक्स है और उसी के आपको उससे कम नहीं जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टी टेस्ट, assume that sample size is large enough for the central theorem to apply. अगर सैंपल साइज छोटा होगा तो टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो सेंट्रल थ्योरम, ये एजम्पशन के डाटा मीन और जो एवरेज के नजदीक ही है सारा, वो नहीं आएगा। इसलिए आपको लार्ज सैंपल साइज लेना पड़ेगा ताकि जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो या एरर जो है वो कम से कम हो। कॉमन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं? सबसे पहला है टी टेस्ट। टी टेस्ट यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप। दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दोनों का अलग अलग मीन्स निकाल लेते हैं, उनको जब कंपेयर करते हैं उसके लिए टी टेस्ट यूज करते हैं। दूसरा है एनोवा टेस्ट। एनोवा इज वेरिएंस के लिए टेस्ट होता है ये। इट यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। more than two groups, then you use ANOVA test. One way ANOVA used for one variable. If variables are two or more, then ANOVA for two-way or ANOVA is used for complex design, where variables are two or more. Regression analysis used to examine relationship between one or more independent variables and dependent variables. Correlational analysis used to measure strength and direction of the relationship between two continuous variables. Two continuous variables, how are they related to each other? How are they dependent on each other? How are they having an impact on each other? Correlational. ANOVA with repeated measures used when same subjects are used for each treatment. You have different subjects, different groups, same treatment is given to them, and then they are compared. Then ANOVA with repeated measures is used. This is basically for longitudinal repeated measure design. Longitudinal means over a period of time, 2-3 साल 4 साल की रिसर्च कर रहे हैं, और a number of times you take readings differently. So that is longitudinal and repeated measure test लिए जाते हैं। Non-parametric tests. Now, what are non-parametric tests? Also known as distribution-free analysis. The distribution of the data is free. It is not around mean itself. Used to analyze data that does not meet the requirements of parametric analysis. Parametric analysis में आपने assumptions किया था, इसमें वो assumption नहीं चलेंगी. So data not necessary के 40 to 45 और 55 के बीच हो. It can vary from 10 to 90, कहीं भी जा सकता है. तो ऐसे में non parametric test
अप्लाई करते हैं. Do not rely on assumption, but the population distribution normally are constant variance. Population distribution जो है वो normally constant variance है, same type of groups होते हैं. Often used when dealing with categorical, ordinal or non-normal distributor. Categorical data क्या होता है? Categorical data when qualitative data that can be grouped into different categories. And ordinal data क्या है? Data having natural ranking, ordering, or you can order them like level of education, uh, range of income, school grades. This, you can range them according to your choice and order them. These are robust and suitable for wide range of data types. अच्छा टेस्ट माना जाता है रॉबस्ट एंड सुटेबल, जहां पे आपके पास डाटा जो है बड़े अलग अलग रेंज का मिलता है. की पॉइंट्स इन of non-parametric test analysis. Types of data. Types of data is इसके key points में आता है well suited for data that does not meet assumptions of normally or equal distribution. It does not meet. Includes ordinal data, nominal data, count data. Categorical data used when response variable is categorical, such as chi-square test for independence. When the response variable is categorical, you can divide the data into subgroups of equal characteristics, then you use chi-square test. Ranking data, many non-parametric tests work with ranked data, ordinal data. Such as Wilcoxon sign rank test or Mann-Whitney U test. We will study this subsequently in 2 to 3 lines. Robustness, these are robust to outliers and non-normality, making them useful in situations where parametric assumptions are violated. Less power is these are less powerful than parametric tests when parametric assumptions are met. However, more appropriate when assumptions are not met. Remember basic difference. When parametric assumptions are met, you use parametric tests. When assumptions are not met, you use non-parametric tests. So this is the test for that. Common non-parametric tests are Mann-Whitney test, U-test, used to compare two independent variables, groups, when data is non-normally distributed or ordinary. Data is spread over not around the mean, but over a large scale. That is the time we use this test. Wilcoxon sign rank test to compare two related paired groups. Kruskal's test is alternative to one-way ANOVA, used to compare more than two independent groups. Chi-square test used to test for independence between two categorical variables in a contingency table. Fisher's exact test for independence between two categorical variables in cases where chi-square test is not appropriate due to small size of sample. If the sample size is small, then you use Fisher exact test. Sample size is large, you use chi-square test. Then is the sign test. Sign test is used for comparing paired data or testing for the median difference. Then is test of significance in data analysis, also known as hypothesis test. Test of significance, also called as hypothesis test. It is to find out if the observed effect, a relationship in data, statistically significant, or if could have occurred by random chance. Is it significant? You carry out the hypothesis test here to find out if the data collected when analyzed, is it significant, is it important, or it has just occurred by chance. These tests help to make informed decisions about their hypothesis and the data they have collected. Common tests are Z test, to compare sample mean to a non-population mean when the population standard deviation is known. You know the standard deviation, and
population mean also. That is the time you use Z test, commonly used in quality control and manufacturing process. Industries में ज़्यादा use होता है. T test to compare means of two groups. We have already done it. Or to compare a sample mean to a non-population mean. Again, of course, two groups are there, sample mean and non-population mean, when population standard deviation is unknown. Independent sample t-test, paired sample t-test, one sample t-test are the example. So what is the difference in z-test and t-test? Z-test when standard deviation is known. T-test when standard deviation is not known. Analysis of variance ANOVA used to compare means among three or more groups. Z-test, T-test only for two groups, ANOVA for three or more groups. Used to compare means among three or more groups to determine whether there are statistically significant differences between the groups. It helps in finding out the differences. Chi-square test used to test for independence between two categorical variables, commonly used in contingency table to find out if the variables are associated. Then is the F test. F test is to compare variances between two or more groups. टू और मोर ग्रुप्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए एफ टेस्ट यूज टू कंपेयर वेरिएंस बिटवीन ग्रुप मीन्स एंड वेरिएंस विद इन ग्रुप्स. विद इन ग्रुप भी मीन आप टेस्ट कर सकते हैं, बिटवीन ग्रुप्स भी आप टेस्ट कर सकते हैं. विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर paired data when it is not normally distributed. Helps to find out if there is significant difference between paired observations. Mann-Whitney U test, a non-parametric test used to compare two independent groups when data is not normally distributed. Data is haphazardly distributed. To compare if one group's value are stochastically larger than the other group's value. Totally different. Kruskal-Wallis, a non-parametric alternative to one-way ANOVA, used to compare three or more independents and to assess if there is significant differences between the group medians. Sign test. Sign test is a non-parametric test used to compare pair data when data is ordinal in rank and order or not normally distributed. It is not normally distributed, vaguely, haphazard. Assesses whether there is a significant difference between paired observation. Kendall-Tau test, a non-parametric test used to measure the association between two variables that are ordinal. Two variables, ordinal rank order number type variables, what is the association between them? You don't see the dependency. You don't change variables. You just see the association between them. It finds out the strength and direction of the relationship. Spearman's rank correlation test, a non-parametric test used to measure the association between two variables. Association between two variables like in the Tau test, when the data is ordinal. Here the data is ordinal and not normally distributed. Again, it is not normally distributed. To determine the strength and direction of the relationship. McNamara test used to compare pair data in a 2x2 contingency table. We have already done 2x2, often used in before and after studies. After studies and before studies, you use it. Next is very important, regression data analysis. What is regression analysis? Statistical techniques used in data analysis to model and examine the relationship between one or more independent variables and dependent variables. It is a statistical technique in data analysis to model and examine the relationship between one or more independent variables and dependent variables. It is fun to find out how changes in one or more independent variable is associated to changes in dependent variable. If you change one
independent variable, how these are associated with the dependent variable. We are only finding the association between the two. It is a valuable tool for prediction and inference, understanding the relationship within data and testing hypothesis. Hypothesis test करने के लिए and relationship के लिए it is a very useful tool used widely in various fields like economics, social sciences, healthcare, and engineering. It is a very reliable method of identifying which variables have an impact on a topic of interest. DV, topic of interest is dependent variable. So which variable has an effect on the dependent variable? It allows you to confidently determine which factors can be ignored and how these factors influence each other. कौन से factor को आप ignore कर सकते हो? What all factors have an influence on each other. Next is key components of the regression analysis. These are dependent variable. Dependent variable is also known as outcome or response variable. It is the variable a researcher wants to predict or explain based on independent variable. Second component is it has independent variable, also called a predictor variable. Independent variable helps in predicting the changes. It is used to predict changes in dependent variable. There can be one more independent variation regression in the regression model. Simple linear regression. One independent variable used to predict changes in dependent variable. So in a graph, you find x-axis, y-axis, the beach make line over. So that is a simple linear variation, you can say. Multiple linear variation is two or more independent variation variables used to predict changes in. If two or more variables being used, you have multiple linear regression. Simple linear, one line, one IV, one DV. Two or more IVs, then you have multiple linear regression. Then is the coefficient. Coefficient represents strength and direction of the relationship between IV and DV. For simple linear regression, a slope coefficient represents the change in the DV for a 1 unit change in IV. Now, easy way to understand is the amount by which change in X must be multiplied to give the corresponding average change in Y. The x-axis and y-axis are like this. This is x-axis, this is y-axis. So with what factor you should multiply the value on x-axis that you get the value average, you find the change in the y. Or amount y changes for a unit increase x. Per unit increase in x, how much y will change? That is the thing. A degree to which the line slopes upward or downward. जो बीच का लाइन है लीनियर इक्वेशन में लीनियर रिग्रेशन का वो to what degree it will go upwards or downwards it will bend. That depends on the coefficient. For multiple linear regression, each independent variable has a coefficient. In regression analysis, each independent variable has a coefficient. In multiple regression, each independent variable, that is two or more variables, each will have a regression value. Then is the intercept. What is intercept? Intercept is the value of y when x is 0. So in this, you have this line graph. The graph doesn't start at the corner at where the xy meet, whereas it starts above some distance. Here the x value is 0. What is the value? That is what we call as the intercept. It is the point where the aggression line crosses the y-axis. It represents predicted value of dv when all IVs are 0. Independent variables are 0, then what is the value of y? Residuals are it is the difference between the observed value of the dv and the values predicted by the regression model. The difference between observed value of dependent variable and the predicted value as per the regression model.
So that difference is called residual. It shows goodness of the fit model. What goodness of it? It means how well the regression model fits the data. How good is your data? Goodness of fit, we call it. It is the goodness of fit is the to test if sample data is accurate or skewed. If the sample data is accurate, you will get goodness of fit. If the sample data is skewed, you are just made up on your own, it is not accurate, then goodness of fit model will not fit. So here, goodness of fit is a common uh, matrix, include coefficient of determination, R squared, adjusted R squared. Higher the R squared, better fit is the model. That is the methodology. Assumption. The next key factor is assumption. Regression model makes several assumptions, including linearity, independence of error, homos statisticity, constant variance of residuals, and normality of residuals. The violations of these assumptions can affect the validity of the model. It is basically meant regression analysis for complex questions. So complex issues, when you go, then you have to consider all these factors. Types of regression, various types of regression analysis like linear regression analysis, logistic regression, polynomial regression, ridge regression, lasso regression, and many more are used. Lasso regression is a regularization technique. Regularization technique used for more accurate prediction. Data values are shrunk towards the central point as a mean. Here you shrink the data values towards the central point of the mean. Mean का the central point उस तरफ आप shrink कर. We also call it as a shrinkage method. Next is general concepts of research writing. It is systematical and structured process of producing scholarly work that presents a well-organized and in-depth exploration of a specific research question, topic, or issue in any kind of research work, like research paper, article, thesis, dissertation, etc. Certain concepts need to be followed. It is a skill that develops with practice and experience. How are you going to write down your research? That is a skill. And how systematically go? What are the key factors in this? We'll just study that. How you carry out the job. You have collected data, you have carried out everything, you have carried out analysis, you have carried out interpretation, you have proved or disproved your hypothesis, done everything. Then you put across in the form of thesis, dissertation, articles, or paper. So this is what we're going to study. The key aspect, the general concepts are research question or problem statement. How do you go about it? Always begin with a clear and concise question or problem that defines scope and purpose of the research. Question statement should be specific, researchable, and relevant. You will find number of things being repeated here. We have already done it. So we are only putting them together as to how the paper should be presented. The first and foremost is your research question should be clear. The second is literature review. Conduct a comprehensive literature review to familiarize with the topic. To know about the topic, a detailed literature review should be carried out. If you are writing thesis, maybe 150 to 100 literatures you should do. For dissertation, maybe 15, 20 help you. For any paper review, maybe 5 to 10, 12 may help you. Literature review helps to find gaps, understand current knowledge, and position yourself within the context of prior work. You find the gap. So within the context of the prior work done by other researchers, you find this is where you stand. Something others have done, but here is still a gap, which when you write a dissertation or thesis, you also put suggestion in the end. If you don't know. So there also, you also give a gap. So literature review helps in finding out the gap, position yourself with respect to the already available research. Research design and methodology describe
design, method, and data collection technique. Justify your choices. Why a particular design or data collection technique or analysis is being done. Explain how the research question will be answered. How are you going to answer the research question? You explain it in your methodology because you have hypothesis. You are proving from the data, you are proving hypothesis. Hypothesis are proving your statement of your question. Then is the data collection. Data collection tells the process of creating and generating data, detailed process. It may involve experiments, surveys, questionnaires, interviews, observations of existing data sets. This is how you carry out your data collection. We have already studied it. Next is the data analysis. What do you do in data analysis? Explain the analytical methods and technique to be employed to interpret the data. Once you have carried out the data collection, you carry out data analysis by using various methods. So you carry out data by using all these tests, t-tests and R and higher R and R squared and all that. This is how you do your data analysis. Already given in the methodology why you are using a particular tool to carry out the data analysis. It may include statistical analysis, content analysis, qualitative coding, etc. You do it. Then is the results and finding. After analysis, what do? You find out the result and finding. Present research finding in clear, concise manner by using tables, graphs, visual aids, etc. to enhance the presentation. Obviously, presentation looks good when you put in graphs, paper charts, etc. It is very easy to understand. That is a discussion. Interpret the results in the context of the research question and existing literature. You already know the gap. Now here you interpret the results of the analysis and discuss the implications of the finding and address any limitations or potential sources of bias in the study. Here, whatever implications of your findings are put in there in the discussion. Conclusion, summarize the key findings and their significance. What are your key findings and what is their importance? Put it here in the conclusion. Restate the research question and its relevance. What was your question? What is the relevance? How it is being answered here? How it is useful to the society? Suggest areas for future research. One part of conclusion is also suggestion and recommendation. That is where you give suggestions of what or further study can be carried out to make it more detailed study. Sometimes people do a general study, research in a general study, and somebody else can take on the specific study from that subject. So you also give gaps so that others can take on the gap left by you also. Then is the citations and references. Citation, properly cite all sources of information, ideas, and data used. In the text of dissertation thesis, you must write the author's name, date, etc. How to write, we will go through it. Follow a citation style guide, APA, MLA, Chicago, to ensure accuracy and consistency. What style has been directed by the institution, you follow that style. Uh, MLA is Modern Language Association. AP is American Psychological Association. So Chicago is Chicago. There's one more, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. So they have already laid down some styles of references and citations. You got to use one of them as laid down by your stakeholder, university or whatever. Clarity and organization. When write in clear, concise, and well-organized manner. Use headings and subheadings as appropriate. Ensure that arguments and ideas flow logically. Please remember, each chapter flows from the previous chapter. Each paragraph flows from the previous paragraph. Each line flows from the previous line. A logical and a very continuous story should be there. That is how you write your thesis or research papers. General concepts of research writing, we move on further, is academic integrity. What is academic integrity?
Adherence to ethical standards, whatever have been laid down by the university. Avoid plagiarism. What is plagiarism? नकल मारना, किसी का लेके कॉपी करके रख दिया. Avoid that. Follow the guidelines and policies of your institution. If whatever policies, guidelines your institution has laid down, please follow that. Revision and editing. Edit your work for clarity, grammar, spellings, and formatting. Read them at least 10, 15 times. Consider seeking feedback from peers, advisors, professionals, editors, and guides. Generally, when we write ourselves, we read it time and again, we tend to miss the mistakes. Therefore, the best is give it to somebody else to correct it, your peers, guides, mentors. They will be able to correct your mistakes in a very, very systematic manner. Then is audience and purpose. Keep your target audience and the purpose of research in your mind. Always remember that every line of your thesis or paper or a dissertation should be relevant to your question, main question. And also ensure that it is easily understandable by those who are going to read it, whether they are your guides, your peers, or people in the public domain, whosoever is going to read it, it should be easily understandable. Adapt your style and tone accordingly. So accordingly, change your style and tone so that people can understand it comfortably. Critical thinking. Engage in critical thinking throughout the research process. Keep the research question in your mind and keep thinking about it, keep thinking about it. Evaluate the quality of evidence. Whatever data you have collected, keep thinking about it, whether it is quality wise, it should be of high quality. Consider alternate explanations. If there are requirements, consider some alternate explanation if wherever required based on your data and analysis. Be open to revising your hypothesis. If you find that your data collection, collected data and analysis is not meeting the requirement of the hypothesis, be open to change your hypothesis so that you can answer your main research question. Time management. Time management is plan everything within a realistic time. Whatever time is available to you, you have to plan every chapter according to the time available. Allocate sufficient time for each phase from data collection or drafting and revision. Each phase should be given specific time, how much time you need for completing your research work. Peer review and feedback. Seek feedback from peers, guides, mentors, advisors. External output will help find blind spots and improve quality of research. I just now said you give it to your peers, guides, and all that. They will correct your spelling mistakes, sentences, repetitions, and improve your quality of work. There may be many blind spots which you have forgotten. They will correct you. Publishing and dissemination is consider submitting to academic journals, conferences, or any other outlet for dissemination. Your research paper, wherever possible, whatever channels you may use to give it to the public so that they can read and get benefit of it. What is the types of research writing? Research writing can make various forms according to audience and objectives. Choice depends on nature of research, the question, and the intended audience. Each paper has its own convention, structure, and purpose. How do you write the various types of paper? So you write research paper, review paper, thesis, dissertation, case studies, conference paper. So it depends upon the audience you are going to address and what are your objectives. So it depends on that. What are your questions intended? Choice depends on that. What kind of question you have. There are different conventions, different methods. These are research papers. The research papers are comprehensive documents presenting findings of original work. You have carried out the research. Now you want to write a paper which you can may publish in the journals. So you pick up some research data which you have already done,
and then you write a paper on that. They often follow a structured format. Generally, you read a journal, you will the papers written for journals, magazines are they are very structured format. Introduction, methodology, results like that. Often published in academic journals. Then is a review paper, also known as literature reviews, provide a summary and critical analysis of existing research on a specific topic. Do not present new search finding. In this review paper, somebody has already written papers. You are only trying to review, like you write a book review, you write a journal magazine review. So critical analysis you carry out of what has already been researched, already done on a particular topic. There is nothing new in it. They synthesize and evaluate the existing literature. Whatever is already existing, you synthesize and evaluate that, how good or bad it is. Thesis and dissertation. These are extensive research projects required for the completion of a graduate degree, master's or PhD. You do MSc, MA, or MBA, etc. You write dissertation. If you are going to do go for PhD, you got to write the thesis. So that is where the extensive research work is carried out. It is an in-depth exploration of a question, methodology, and presentation of original findings. You have to carry out the original finding. You collect data that is original, and then how do you write those theses and dissertations? Then there are conference papers. These are research papers presented at academic conferences. How do you write that? Offer an opportunity to share research findings with an academic or professional community. They are known as conference papers. They are case studies, in-depth examination of a particular individual, group, or phenomenon. You write a case study. And then how do you project it? These are presented a white paper in the parliament on the finances handled by the previous government and what they have done. So that is white papers. Then there are policy papers, provide research-based recommendations and analysis to inform policy decision. Policy papers when you have to inform the policy decision. They also carry out research, find out recommendations, analysis, and then based on that, they prepare the policy paper. These are used in governments, think tanks, and advocacy organizations. Grant proposal, where you need funding from any industry firm, you put up a grant proposal. They must clearly outline the research question, objective methodology, and expected outcomes to get the grant from the industry or the government. Then is the literary analysis. What is literary analysis? These are papers to examine and interpret literature, including novels, poems, plays, and essays. So you interpret them. So carry your literary analysis. Then business reports, they provide you uh, insights and recommendations related to specific business issues. May include market research, financial analysis, and strategic planning. They are business reports. Then there are scientific articles. These are research papers written for publication in scientific journals. They adhere to specific format, including abstract, introduction, methods, results, discussion, references. These are the lines you got to follow if you are writing a scientific article. Then empirical studies involve collection and analysis of data to answer research questions. Takes various forms such as experiments, surveys, observation studies. So this is one. Another is feasibility studies. What are feasibility studies? Such papers are written to assess the validity of a project, business venture, research proposal.
Factors like cost, risks, and potential बिल्कुल benefits सर। are considered in such papers. Patient case reports. Patient case ओके आंटी। reports in medical field, such reports provide detailed description of unusual or noteworthy medical cases. These are regarding patients. It is to advance medical knowledge and practice, and of course to change medicine wherever required. Then you have position paper, present to defend a specific viewpoint, a stance on a particular issue. On a particular issue, you have your own views, your own stance. How do you project it? How do you position with respect to that view? You call it position paper, commonly used in policy advocacy and academic debate. Educational research paper, they focus on issues related to teaching, learning, and educational policy. May target educators, administrators, and policymakers. Next is interpretation of research writing. ओम शांति। ओम शांति सर। हेलो। हेलो। यस। हाँ सर, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं बीच बीच में? Okay, आज। sure, sure, sure. हाँ। I will do. I will do. थैंक यू ओम शांति। Interpretation of research writing. How do you carry out the interpretation? Read actively. Pay close attention to the test chart, tables and reference. जब आप रिसर्च राइटिंग को पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप उसके टेक्स्ट जो लिखा गया है वर्ड्स में, टेबल्स, रेफरेंसेस, चार्ट्स, ग्राफ्स को ध्यान से पढ़ें, उनको हाईलाइट करें, की पॉइंट्स को, फाइंडिंग्स एंड कंसेप्ट जो है उनको हाईलाइट कर लें, ताकि आपको रिलेटिवली उनको पढ़ना आसान हो जाता है। अंडरस्टैंड द रिसर्च क्वेश्चन। जो सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन आपका है, जिसके ऊपर पूरी रिसर्च की जा रही है, उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसको यहाँ रखें, दिन रात सोते जाते नहाते खाते पीते उसको याद करें, याद करें, याद करें। आपका जो थीसिस डिसर्टेशन जो भी पेपर लिख रहे हैं, 24 घंटे आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूं, इज इट आंसरिंग माई क्वेश्चन, इज इट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन? इफ इट इज नॉट रेलेवेंट, रिमूव इट. If you are writing thesis, you will have so much material that you won't know what to remove, what to write. So you want to filter it out. फिल्टर करके उसको रिमूव करना है जो इररेलेवेंट है, जो रेलेवेंट, जो मतलब के पॉइंट्स हैं, खाली उनको लिखना है. रिव्यू द मेथोडोलॉजी. हाउ टू इंटरप्रेट रिसर्च राइटिंग. जो मेथोडोलॉजी उसको रिव्यू करें. अंडरस्टैंड हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड. आपने कर ली रिसर्च, अब उसको अंडरस्टैंड करें कि रिसर्च कैसे कंसिडर, मैंने क्या मेथड यूज किया है, क्या डिजाइन यूज किया है, क्या डाटा कलेक्शन मेथड यूज किया है, क्या स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टेक्निक यूज किया है. असेस द स्टडी रिगर एंड रिलायबिलिटी. क्या मेरी स्टडी रिलायबल है, रिगरस है, रोबस्ट है, वैलिड है. इन सब चीजों को आप जब रिसर्च राइटिंग करते हैं तो अपने दिमाग में रख के इंटरप्रेट करें कि क्या मेरी स्टडी, मेरी रिसर्च ऐसे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है. एग्जामिन द रिजल्ट्स. एनालाइज द रिजल्ट सेक्शन टू नो द की फाइंडिंग्स. जो आपका रिजल्ट लिखा हुआ है आपने उसको जो ध्यान से पढ़ें, एनालाइज करें कि क्या मेरे जो फाइंडिंग्स हैं उसमें वो रेलेवेंट हैं, ठीक. पे अटेंशन टू एनी ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. देखें कि ये जो फाइंडिंग मैंने लिखी है, वो जो ग्राफ्स हैं, जो और जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स वगैरह हैं, ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स हैं, क्या ये उनके साथ रेलेवेंट है, के मुताबिक है. चार्ट कुछ और है, जिसका रिजल्ट कुछ और है, तो आप गलत हो जाएंगे. तो इट शुड बी रेलेवेंट टू दैट एंड करेक्ट. Consider significance and implications of these findings. ये जो फाइंडिंग्स आपने निकाली हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्प्लीकेशन है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और क्या यूजफुल होगा इसका, ये आपको ध्यान में रखना. ये बीच में बोलिए नहीं बहन जी, कोई प्रॉब्लम. किसी का माइक कंटेक्चुअल. ऑन है? पार्डन. किसी का किसी का माइक माइक ऑन नहीं. है? कंटेक्चुअलाइज द फाइंडिंग. जो फाइंडिंग है
उसको स्टडी रिलेट्स टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑफ द टॉपिक। जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आपके पास उसके साथ ये कैसे रिलेट कर। Assess whether the finding confirm extended challenge previous research। किसी और ने पहले से उस सब्जेक्ट में रिसर्च की हुई है तो आप देखेंगे कि आपकी रिसर्च उसको क्या कंफर्म करती है, क्या उसको फर्दर एक्सटेंड करती है, क्या कोई और चैलेंज आपके सामने है। Evaluate the discussion। शिप्रा बहन इस का section माइक ऑन है। शिप्रा बहन, इसका शिप्रा बहन। बहन जी जिसका माइक ऑन है बंद कर लीजिए प्लीज। Evaluate the discussion। This section provides the author's interpretation of the results। evaluate evaluate कैसे करते हैं, जो आपने इंटरप्रिटेशन किया है रिजल्ट्स को उसको लेकर करते हैं। इसको देखना है ऑथर्स के क्या आर्गुमेंट हैं, इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है फाइंडिंग के ऊपर, तो ये देखना है। आर फाइंडिंग वेल सपोर्टेड, जो फाइंडिंग्स हैं क्या वो ठीक ठाक जो डाटा कलेक्ट किया है, जो लिटरेचर किया है, जो एनालिसिस किया उसको सपोर्ट कर रही है। आपके फाइंडिंग बिल्कुल एकदम उसके मुताबिक होने चाहिए। Identity limitation। Limitation may include issues with the methodology, data और sample size। आपका sample size के साथ, आपका data के साथ, आपके methodology क्या यूज किया है, इसमें आपके लिए कुछ limitations हो सकती हैं। Sample size बड़ा नहीं मेरा छोटा लेना पड़ा, इसके लिए particular tool methodology यूज करनी पड़ेगी, तो वो limitations में आ जाएगा। तो आपको अपनी finding result देखना है कि मैंने जो लिखा है रिसर्च राइटिंग किया है पूरा लिख दिया है थीसिस, वो मेरे लिमिटेशन के साथ मेल खाता है, वो लिमिटेशन आनी चाहिए उनका, और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है ऑन वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। क्या जो लिमिटेशंस के अंदर जो मैंने स्टडी किया है वो ठीक है, वो वैलिड है। इतना छोटा डाटा भी नहीं हो सकता कि आप उसको जनरलाइज कर सकें और बोलें कि ये वैलिड है, वो भी नहीं होगा। Consider implication। Reflect on implication of the research finding। जो आपने रिसर्च फाइंडिंग्स किया है उनकी जो implications क्या होंगी, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अपने दिमाग में सोचें। How do they contribute to the field of study। नॉलेज इंक्रीज करने में ये कैसे फायदा देगा। एंड व्हाट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन डू दे हैव। और रियल वर्ल्ड जो हमारे सामने संसार है पूरा, इसके ऊपर उसके ऊपर इन मेरी फाइनेंस का क्या असर होगा, क्या फायदा होगा, कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। देन इज evaluate the quality। evaluate the quality is assess the quality assess the overall quality of the writing। आपकी रिसर्च राइटिंग जो है उसमें रिसर्च लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी गुड एंड वर्थ रीडिंग। Consider factors like credibility of the authors, the journal or source of publication, research methodology and rigor। अगर आप किसी जर्नल में आप पेपर वगैरह भी छाप रहे हो, अपने रिसर्च के ऊपर लिख रहे हो, तो देखना है कि जर्नल कौन सा है, उसके ऑथर्स कौन है। There should also be uh, people of repute। उसका भी कोई अपना क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा मत करिए कि किसी को 5-7 हज़ार रुपए दे के अपना जर्नल छाप लिया, वो नहीं करना है। जो अच्छे जर्नल्स हैं जब उनमें आप छापने जाएंगे पेपर, तो इट टेक्स सम टाइम ईयर्स, तो वो इतना डिटेल में जाते हैं। तो अच्छे मैगजीन जर्नल में पेपर छापना, उसके लिए आपको ये सारा तैयार करना पड़ेगा। अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर्म योर ओन पर्सपेक्टिव। कंसीडर योर ओन पर्सपेक्टिव ऑन द फाइंडिंग ऑफ द ओरल। अपनी सोच रखें कि भाई मैंने जो भी फाइंडिंग लिखी है एनालिसिस के हिसाब से, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क जो मेरी है वो अच्छी है। सेटिस्फाई योर सेल्फ हेयर, यस आई हैव डन ए गुड जॉब। डू यू एग्री विद ऑथर्स इंटरप्रिटेशन और डू यू हैव ए डिफरेंट व्यू। जो आपने पढ़ा है, जो आप रिसर्च करके किसी की रिसर्च अगर पढ़ते हैं, आप उससे सहमत हैं या नहीं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कंपेयर विद अदर रिसर्च इफ अवेलेबल, कंपेयर विद अदर स्टडीज ऑन द सेम टॉपिक। मौका मिले तो सेम टॉपिक के ऊपर अपने पीयर्स, गाइड, मेंटर्स के साथ डिस्कशन करें। दिस विल हेल्प टू असेस द कंसिस्टेंसी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग। जब आप फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर लेते हैं तो इसमें आपको मदद मिलेगी। आस्क क्वेश्चंस।
Don't hesitate to ask questions if something is unclear or if you need further clarification. आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप समझते हैं कि कोई चीज क्लियर नहीं है, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम कलीग्स, पीयर्स, go back to the sample, keep asking yourself. ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कीप आस्किंग योर क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या आप जो मेन क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आर यू रिप्लाइंग दैट। सीक आउट एडिशनल सोर्स और रेफरेंसेस टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। कहीं कमी आती है तो इसको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए और ज्यादा लिटरेचर रिव्यू पढ़ें और लोगों से मिलें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें। याद रखें, मैंने एक नोट भी लिखा है इसमें, इंटरप्रेटिंग रिसर्च राइटिंग इज एन एक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। जो रिसर्च राइटिंग है उसको इंटरप्रेट करना, पढ़ना भी एक आर्ट है। तो मैं आपको एक मतलब की बात यहाँ पर बता देता हूँ। हम बोलते हैं, अभी मैं भी बोलूंगा जगह जगह, इंट्रोडक्शन लिखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखो, मेथोडोलॉजी लिखो, बड़ा सीक्वेंस दिया हुआ है। पर इसका बेस्ट लिखने का तरीका होता है इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में लिखो, सबसे लास्ट में इंट्रोडक्शन लिखो, ताकि आपने जो पूरा लिखा है उसका जिस्ट उसमें आ जाए। जो ही पढ़ने वाला आदमी इंट्रोडक्शन पढ़े उसको पता लगना चाहिए अंदर क्या है। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज प्लेजियरिज्म। ये आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। नाउ व्हाट इज प्लेजियरिज्म? प्लेजियरिज्म इज नकल मारना, किसी के काम को अपना दिखा देना। आप किसी ने रिसर्च किया हुआ है, उसका डाटा ले लिया, उसके बुक से कोई रेफरेंस ले लिया, उसके कोटेशन ले लिए, कुछ भी ले लिया, और उसको लेके यू शो एज इफ दीज आर योर ओन। दिस इज नोन एज प्लेजियरिज्म, नकल मारना। नकल नहीं मारनी है, अच्छे बच्चे बनना है, बाबा के बच्चे बनना है। इट इज एन एक्ट। जैसे किसी का कॉपीराइट होता है ना किसी चीज के ऊपर, आप उसको उसका नाम लिए बिना अगर अपना नाम दे देंगे कि हमने ने किया है, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है। इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स words, ideas or work without giving him due credit or without permission and presenting it as your own. किसी के काम को अपना दिखाना, उसकी परमिशन लिए बिना दिखाना, या उसको ड्यू क्रेडिट नहीं देना, उसको साइट नहीं करना, रेफरेंस में नहीं दिया, दिस इज प्लेजरिज्म। कंसिडर्ड एज एथनिक एंड एकेडमिक वायलेशन। ये एथनिक कंसिडरेशन मैंने बार बार पढ़ाया आपको, ये एथनिक कंसिडरेशन की वायलेशन है, और वेरी सीरियस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव सेटिंग में इट इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लाइक एकेडमिक पेनल्टीज। आपको पेनल्टी मिल सकती, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, और आपको कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है कि मेरा काम आपने इस्तेमाल कर लिया है बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे रेफरेंस के। इट इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ कंप्लायंस बट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, हाउ ऑनेस्ट यू आर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। खाली कंप्लायंस की बात नहीं कि आपने नहीं किया, आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि प्लेजरिज्म नहीं करना है। अवॉइड प्लेजरिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट टू ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल स्कॉलरशिप। आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो बी ऑनेस्ट, बी कमिटेड, कैरी आउट हार्ड वर्क एंड डोंट कैरी आउट प्लेजरिज्म। इसके बड़ी आजकल सॉफ्टवेयर है प्लेजरिज्म चेक करने का, आगे बताऊंगा। उसमें आपके थीसिस रिसर्च पेपर डाल दिए जाते हैं, 10 मिनट में वो बाहर आ जाएगा, वर्ड बाय वर्ड बता देगा कि आपने यहाँ यहाँ नकल मारी है। तो आपने नकल नहीं मारनी है। क्यों? क्योंकि आप सब बाबा के बच्चे हैं। की पॉइंट्स अबाउट प्लेजरिज्म। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं प्लेजरिज्म के? Copying verbatim text from a source without proper citation। आपने टेक्स्ट जब लिखते हैं उसमें साइट करना है कि ये कहाँ से लिया है। साइट कर देंगे तो वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने साइट नहीं किया प्रॉपरली, तो वर्बेटिम किसी के चीज को उठा के आपने डाल दिया अपने टेक्स्ट में, तो उसको प्लेजरिज्म माना जाएगा। दूसरा है पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट। उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, पैराफ्रेज कर लिया, समराइज कर लिया, विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट। जिसका है उसका नाम ही नहीं है, जिसने रिसर्च किया था उसका तो नाम ही नहीं दिया, दिस इज प्लेजरिज्म। सबमिटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन। किसी और का काम करके अपना दिखा दिया कि मैंने किया है,
This is plagiarism. Self-plagiarism, where you use your own work without proper citation. अगर आपने कोई रिसर्च किया हुआ है, आप उसको भी साइट करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आपको उसमें भी अपना नाम डालना होगा। आप उसको भी ऐसे यूज नहीं कर सकते, वो भी प्लेजरिज्म में आ जाएगा। जैसे रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आप अपने पेपर छापते हैं। जब आपको कंपल्सरी पेपर पब्लिश हो जाते हैं, आप उनको अगर थीसिस में यूज करना चाहते हो, तो आपको अपना नाम देना होगा कि ये मेरा है। Consequences of plagiarism are academic penalties, फेलिंग ए कोर्स, सस्पेंशन और एक्सपेल्शन, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी से निकाल दें, जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो फंड देना मना कर दे, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, डैमेज, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर वगैरह होगी तो लीगल एक्शन, मतलब आपको कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है, बहुत हैवी पेनल्टीज हो जाती हैं। एथिकल कंसर्न, कंसिडर अनएथिकल एंड डिसऑनेस्ट, ईमानदारी से काम करिएगा, डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं बनना है। प्रिवेंटिंग प्लेजरिज्म, ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंस। जिसने जो काम किया उसका नाम लिखिए कि भाई मिस्टर ए ने किया, मिस्टर डी ने किया, मिस्टर जॉन ने किया, उसको रेफरेंस दीजिए, उसको क्रेडिट दीजिए। याद रखिए, जब आप रिसर्च करेंगे, आपके थीसिस भी डाउनलोड हो जाएंगे, तो लोग आपको भी क्रेडिट देंगे, आपका भी नाम आएगा। Familiarize yourself with citation styles, APML, शिकागो, use them correctly। ये जो 3-4 स्टाइल हैं रेफरेंसेस देने के, ये आगे करेंगे हम, कैसे करना है इनको यूज, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, डू नॉट रश थ्रू एंड कॉपी ड्यू टू प्रेशर। अपने टाइम को सही मैनेज करें। टाइम कम, समय नहीं था, इसलिए आपने किसी का कॉपी कर लिया, प्लेजरिज्म में माना जाएगा, फेल हो जाएंगे। यूज प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल, थीसिस को, रिसर्च पेपर्स को चेक करने के लिए कि कहीं प्लेजरिज्म तो नहीं है, इसके टूल्स हैं, सच ए टर्न इन, कॉपी स्केप। ये आमतौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसमें पूरे थीसिस 200-300 पेज की डाल दो, वो आधे घंटे में बाहर आ जाएगा, सारा लिखा हुआ कि आपने कहाँ कहाँ नकल मारी है। तो उसको यूज करें ताकि आपको पता लगे कि आपके थीसिस करेक्ट हैं। बिफोर सबमिशन, जमा करने से पहले इसको यूज कर लें। की पॉइंट्स अगेन अबाउट प्लेजरिज्म आर कोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। कोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग क्या है? व्हेन यूजिंग समवन एल्स वर्क, enclose them in quotation marks and provide same। जब आप किसी और का काम यूज कर रहे हो, किसी और के कोटेशन यूज कर, वर्ड यूज कर रहे हो, तो उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में डालिए और उसका रेफरेंस दीजिए, अपना साइट भी करिए, बाद में रेफरेंस में भी दीजिए। When paraphrasing, reword the content in your own words and still provide a citation। आप किसी के पैरा को यूज करते हो तो उसको पैराफ्रेज करें, रीवर्ड करें, लेकिन याद रखें कि उसमें भी साइटेशन जरूर दें, उस जिसने भी लिखा है, रिसर्च किया हुआ है, उसका नाम बता दें। सेल्फ प्लेजरिज्म, यूज कोटेशन मार्क्स एंड साइटेशन फॉर योर ओन वर्क आल्सो। जो आपका अपना काम है उसके लिए भी आप रेफरेंस दें, साइट करें। कॉमन नॉलेज, कॉमन नॉलेज इंफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर साइटेशन बट इट मे वेरी बाय कंटेक्स्ट एंड ऑडियंस। कई चीजें हैं जो कॉमन नॉलेज में होती हैं, अगर आप ऐसे वर्ड यूज करते हो जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, उसमें साइटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी आप अपनी तरफ से उसका कंटेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। करिए। Credit to original authors. Always give due credit to original authors and creators of the work under reference। जिन्होंने भी कुछ काम किया है, जिसके भी काम को आप यूज कर रहे हो, उसको आप मेहरबानी करके ड्यू क्रेडिट दीजिए, साइट भी कीजिए, रेफरेंस में भी डालिए। प्रॉपर एट्रीब्यूशन, साइट ओनली, नॉट ओनली द टेक्स्ट बट आल्सो सोर्स ऑथर, पब्लिकेशन डेट एंड पब्लिकेशन डिटेल। ये कैसे एट्रीब्यूशन किया जाता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। Peer review and feedback, seek feedback from peers, mentors, advisors to identify and correct any plagiarism। Educational resources, many educational institutions provide resources and workshops on how to avoid plagiarism। कई यूनिवर्सिटीज वगैरह इसके ऊपर सेमिनार वगैरह करते हैं, सोर्सेज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनको अटेंड कीजिए, सीखिए कि किस प्रकार हम प्लेजियरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। Here I finished the first class, the class of yesterday,
You have 5 minutes break and then we will have today's class. Okay?